India's Textile Minister Giriraj Singh has wrapped up his official visit to Japan with a heartfelt interaction with the Indian community in Tokyo. The minister's outreach not only celebrated India's vibrant diaspora but also underscored the country's growing textile diplomacy. Ending his high-level engagements on a warm note, the minister met with members of the Indian community in Tokyo, calling them ambassadors of India. He urged them to remain rooted in Indian culture and values even as they continue to contribute to Japan's progress. भारत और जापान एक दूसरे से बड़े नज़दीक हैं, सभ्यता और संस्कृति से भी। सारे लोगों ने भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हैं और कई कंपनी वहाँ ऑफिस खोल चुके हैं और कई कंपनी और जाने वाले हैं। हमारे लिए खास करके टेक्सटाइल के सेक्टर में टेक्सटाइल मशीनरी के सेक्टर में भी लोग आए थे। उन लोगों ने भी इच्छा जाहिर की है। कई लोगों ने जॉइंट वेंचर की बात की है। तो मुझे लगता है कि ये 3 दिनों की यात्रा हमारी बड़ी सुखद यात्रा रही है और लोगों का विश्वास भारत पे बना है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। Well, Ambassador of India to Japan, C.B. George, also addressed the gathering, saying that the example of India-Japan cooperation in the automobile sector should be followed in the textiles. There are many areas in which India-Japan business connect is very strong. Automobile sector. There is more Suzukis today in India than in Japan, if you count the number of vehicles. Okay, and very happy to know that now Suzuki is importing cars from India to Japan. So this is something which we want to replicate in the textile sector. And I am convinced that under his leadership, under the guidance of our Honorable Prime Minister, we would be able to achieve that target.